Hope the previous classes of uterine prolapse and anatomy, all that was clear. And as a in the profession, we are sometimes helping the patients as counselor also. And many of the times, many needy and poor peoples are around us, so that we can completely provide them the medical facilities. For them, many of the government programs and means all the citizens it is there, but mostly people afford them. But a vast variety of Indian population that's belongs to rural areas or are economically poor section, they can't afford. So for them, many of the government programs are initiated to motivate them to have healthy lifestyle, and hospital deliveries and many government procedures are there, and they even give the incentives for that. So if they don't have educational awareness about their health, so in sake of money at least, they will take professional help, and their health will be in good conditions. So today we'll discuss about some of these programs. Since years, many programs are there, like vaccination program is very common in children and in pregnant women also. So this is also under the government scheme, like umbrella program, 7 vaccination for from infant to child stages are there. That are major vaccinations, and other than that, you can opt by your choice, but 7 are main, and government is providing them, and it is necessary. And similarly, antenatal care and health awareness is also necessary, and many of the programs are started by government for that. So we'll discuss that only. That you can search on online also, many programs are there. We are going to the government website only, because most authentic informations are there only. So these are list of government programs. You can do your search and expand your knowledge by these online programs, and various PDFs are formed by government is also there. So it is I think it is necessary to keep the basic things as a basic. That's why I'm going directly to this. So programs like female health care, including schemes for pregnant women, children, and women in need, like Janani Suraksha Yojana, conditional cash transfer program that promotes institutional delivery. So Janani is pregnant women, and uski suraksha se related jo yojana or schemes are there, and how they will promote that. Why any Janani come to the government institution? So government provide cash transfer to promote institutional deliveries. Female which is under this program will be provided cash on the delivery hospitals. Janani Shishu Suraksha Karikram that provides, here both are important, health of growing fetus and pregnant female. So free deliveries, diagnostics, various diagnostic procedures from hemoglobin level to antiviral markers. These are necessary, and medicines like iron, calcium, basic medicine or supplements. If required, blood, diet, counseling, and they provide some basic nutrients if there is a deficiency, and transport for pregnant women. They even provide the ambulance for females to reach the hospitals. So this comes under the Janani Shishu Suraksha Karikram. And to take the incentives, it is converted to the Janani Shishu Suraksha Yojana. And the new program that is launched by Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana that provides a cash incentive of 5,000 to pregnant women
and lactating mother to overcome the deprived conditions and to nurture the pregnant female as the demands increases and to have the healthy progeny. uh, this plan is made to provide incentives of 5,000 to per pregnant woman and lactating mothers, including this for the neonates, infants, and adolescent. Also, Rashtriya Bal Swasthya Karyakram is there, and Ayushman Bharat program. As it was launched, it was uh, given a grand opening, and still there. Ayushman Bharat program is there, and health cards are being provided. So Ayushman Bharat program, these are in general, and the above programs were related to the women health especially. And these are some basic informations, and you can go to this major sites like PIB to have details of these programs. So if you go to authentic sites, you will win authentic informations. So under the health scheme and National Health Mission, a flagship program of ministry with two submissions, that is and National Health Mission is again divided into National Rural Health Mission. Firstly, that mission was initiated for the rural health only. NRHM, that is नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कि गांव में लोगों को ओरिएंटेशन नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता है, घर में दाई एंड ATC आर कमिंग, या whosoever इधर इट इज राइट और रॉन्ग. कई बार पुराने नॉलेज बहुत अच्छे भी होते हैं. अगर आप प्रोफेशनल आपने ट्रेनिंग ली है, देन इवन आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो कई बार नॉन प्रोफेशनल अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ अच्छा बताते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द टाइम दैट चेन इज बीइंग डिस्टर्ब. एक ऑथेंटिक नॉलेज डिस्टर्ब होते होते वो कुछ मीन्स गलत मैसेज लेके जाता है, और उसी में ही वो डिलीवरीज हो रही हैं, पेरियनल टीयर्स हो रहे हैं, तो ऐसे ही ज्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रहा है कि यस डिलीवरी हो जा रही है, बट कॉर्ड अराउंड द नेक इज देयर. नो वन इज टू गाइड हाउ टू go for the LSCS or any other procedures. So इस सब चीजों को ओवरकम करने के लिए मीन्स ये तो सिर्फ वुमेन हेल्थ से रिलेटेड बात है. इन ओवरऑल हर जगह ट्रबल्स आती थी, तो रूरल हेल्थ में एजुकेशन की भी कमी है, तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया गया. एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने ऐसा देखा होगा कि अर्बन सेक्टर में भी इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि रूरल एरिया से कई लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आ जाते हैं. यहाँ फिर वहां पे भी लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी स्टार्ट किया गया, एंड इट इज कंबाइंड एज अ नेशनल हेल्थ मिशन, and that supports states and union territories to strengthen their healthcare system so as to provide universal access to equitable, affordable, quality healthcare services. So maternal health में reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health, ये JSSY जननी शिशु सुरक्षा योजना में मतलब है. सबसे पहला ये एरिया कवर करते हुए कि रिप्रोडक्टिव से लेके मेटरनल हेल्थ पे, देन नियोनेट्स, वो फॉर द चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट हेल्थ. एंड राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एडोलेसेंट एज में many of the psychological and during the puberty many of the body changes are there due to hormonal changes. So many they can suffer from many physical, mental problems, any of the deficit, as they require the proper nutrition, may they suffer from any deficiency disease, or they may get some wrong knowledge, or that may harm that adolescent age. So Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram is there, and Rashtriya Bal Swasthya Karyakram for children, and Universal Immunization Program, that is for the immunization we discussed, and Universal Immunization Program may be umbrella program, that is indicates under one umbrella
seven, like the seven colors of rainbow. It major seven vaccinations are there, from polio to JE and all that. Mission Indradhanush, that's a part of this. एंड जननी सुरक्षा योजना, इसको शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड लक्ष्य प्रोग्राम. लक्ष्य प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किया कि लेबर रूम में जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कि स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, स्टेराइल ग्लव्स यूज हो रहे हैं, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए जो भी मॉप्स पैड्स जितनी चीजें यूज हो रही हैं या शीट्स हैं, ऑल दीज आर स्टेराइल, कि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं बने. उस टाइम फीमेल की कंडीशन ऐसी रहती है कि इम्यूनिटी इज नॉट गुड, एंड वो फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता रहता है, ब्लीडिंग हो रही है, यूरिनेशन, मिक्चुनेशन, डिफेकेशन, ऑल द प्रोसेस आर एट द सेम टाइम, बेबी इज कमिंग आउट एमनियोटिक फ्लूइड, और वो मीन्स एक्सचेंजेस होते हैं. तो इसमें एक लेबर रूम की क्वालिटी एंड स्टेरिलिटी एंड हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए लक्ष्य प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है. these are basically related to the pregnant females and child and adolescent. and कई न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स भी हैं, लाइक नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम मा is mother's absolute affection, that is the program for infant and young child feeding. It is related to the lactation. So program related to the lactation is ma. So uh, in your private setup also, you can coordinate with the government bodies and initiate these programs at your center only, so that you can help the needy ones and improve your practice and experience. And if it is not possible for you to collaborate with these government bodies, you at least you can refer the patient, or you can say needy patient, to that centers, who is where it is providing directly to the government institutes or collaborative institute, or you can be there in the government health sector and give the benefits of these programs to the needy ones. But first of all, it is necessary to be aware of these programs. So MA is related to the lactation, National Program for Prevention and Control of Fluorosis, and especially due to the intake of water, high fluorine contents that may cause fluorosis. And National Iron Plus Initiative for Anemia Control, due to the worms and many other reasons. Anemia is one of the common condition in Indians. And related to the communicable disease, integrated disease surveillance program, revised national tuberculosis program, leprosy eradication program. ये तो कॉमन में जाएगा. आपके मेटरनल हेल्थ केयर में भी अगर कुछ इस तरह की डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, तो आप इन प्रोग्राम्स की हेल्प ले सकते हैं. बट डायरेक्टली इट इज नॉट इन द मेटरनल हेल्थ केयर एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम्स भी. अगर इसमें कहीं इस कैटेगरी में लाइक डायलिसिस प्रोग्राम्स और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, सो इनमें अगर इस कैटेगरी में फीमेल आती हैं तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो. अदरवाइज ये PIB के साइट पे, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, में हेल्थ केयर स्कीम्स की जो डिटेल्स दी हैं, तो इसका जो फर्स्ट कैटेगरी है वो तो ऑब्वियसली दैट इज इम्पोर्टेंट एज पर योर कोर्स और द सब्जेक्ट taught by me. And the second category is also important to some extent, and other two you may take help when required. And along with that, in this profession you must know about the Ayushman Bharat program that was launched in the 2019, provides for the holistic integrated healthcare and principal vehicle for achieving universal health coverage. तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए डिजाइन किया गया है. और साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जन आरोग्य योजना, ये सब गवर्नमेंट प्लान्स हैं कि आपको इस प्रोफेशन में होने पे इतना एक बेसिक नॉलेज इन चीजों का होना चाहिए. एंड स्पेशली इफ यू आर डूइंग दिस कोर्स, तो वो जो स्टार्टिंग 2 कैटेगरीज थी, उतना आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि इट मे हेल्प
and your patients even. So all that was about the government programs in short, that is especially related to the antenatal period and females. So you can help your patients uh, by this program, or you can take government programs or introduction of these programs launched by the government of India. And any problem or any queries if you have. और वो आपने देखा था एनाटॉमी का जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. Should I ask some questions from anatomy? A size of uterus? Anyone? Supporting system of uterus? अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाहते हो, you can write in chat box also. Please go through that slides even. क्योंकि ये बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर क्लियर होगी तो बाकी चीजें भी क्लियर होती जाएंगी. अच्छा, एंड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कितने फेजेस में डिवाइड करते हैं, या पिट्यूटरी हार्मोन्स आप बता सकते हैं? Which axis is involved for menstruation in females? HPO. HPO axis. H for hypothalamus, P for pituitary, and O for ovarian. So these hormones from hypothalamus, GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, is released, that gives signals to pituitary, and there in the after the menstruation, FSH, follicle stimulating hormone, because that developed follicle is and preparations for the fertilization was drained off during menstruation. So to repeat that cycle, to have fertilization again, ovary or body needs an new follicle. So FSH is released, follicle stimulating hormone, that will stimulate the follicles in the ovary, and that follicle develops, and at that stage ovary release estrogen, and when the estrogen and FSH goes to the peak, so that gives signals to the inhibins to the pituitary कि ovary signal देती है pituitary को कि that stop that, it's too much, and at that time the ovary release luteinizing hormone, because to here the follicles are grown at full, and that levels of luteinizing hormones is raised, and at the same time the ovulation, when all the progesterone is also released, and when all the hormones at their peak, the ovulation is done, and at the time of ovulation, if that sperm that ovulated ovum is there in the uterus from the, or you can say in the fallopian tube for 2 to 3 days, and at the same time if sperm penetrates there, then it is that's quite possibility of fertilization, and if it is not there, then ovum is spelled out, and but then also the corpus luteum is being developed, progesterone is being released, luteinizing ovaries give signal, please stop that, and these two hormones also comes to decline, and when all that means ki there is no need of all these preparations that was ovaries doing for fertilization, and everything is shed off in menstruation, and again new cycle begins. So this is the menstruation cycle in short, and the structure of ovary
that is dome-shaped ovary, 3 to 1 in dimensions, thick musculature, two fallopian tubes, and ovaries insides, that is normal, antiversion and antiflexion are the angles that the cervix and vagina and uterus is tilted to place in the position. And the ligaments are the supporting structure, and true ligaments and false ligaments, two types of ligaments are there. And true ligaments are the truly ligamentous structure that provides support to the ovary, to the bony structure, and false ligaments that are the peritoneal lining that supports the ovary to some extent even. And these are the ligamentous supports, and musculature is also there. And all these are the supportive structure for the ovaries. And in last 2 3 classes, I'm again and again focusing on that anatomy and physiology only. आपको भी लग रहा होगा कि क्यों हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू वेस्ट द टाइम ऑन दीज टू टॉपिक्स. इफ यू वांट टू लर्न गायनाकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक में ही हैं, but to excel in these topics, it is very important to excel in these subtopics of that is anatomy and physiology. क्योंकि इस पे आपका कंट्रोल होगा तो आपको आगे की चीजें बहुत आसानी से होती जाएंगी. एंड बीच में तो मैंने आपसे नहीं पूछा था, बट इन द क्लास ऑफ प्रोलैप्स आई डिस्कस, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं कुछ मतलब इसको या तो आप लोगों ने काफी टाइम से रिवाइज नहीं किया है, या कुछ प्रॉब्लम शायद इन दोनों टॉपिक्स में है. क्योंकि ये बेस बनाते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी किसी भी चीज की, मीन्स की एक बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर अच्छा होगा तो दैट बिल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. बट फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो उसके आप ऊपर आप बहुत अच्छा अच्छा सब मटेरियल लगा लो, कुछ भी कर लो, बट दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग. सो इट इज द फाउंडेशन एनाटॉमी फिजियोलॉजी. प्लीज मेक इट क्लियर. और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, और तब मैं म्यूट मोड में ज्यादा रहूंगी और आप लोग अनम्यूट मोड में ज्यादा होंगे, जस्ट टू आंसर दीज. ओके, तो अभी 10 मिनट्स आपके बचे हैं क्लास के लिए. आपने अपना इस क्लास को 40 मिनट्स डिवोट किया है, but I request you, please, I am leaving, and in these 10 minutes, please just scroll एनाटॉमी फिजियोलॉजी. उसके बाद आपको जब भी टाइम आपने उसके लिए डिसाइड किया है, आप उसको ऑब्स गाइनी के लिए आप उसको आराम से देखना, बट ये 10 मिनट्स भी आपके ऑब्स गाइनी को ही डेडिकेटेड है. सो प्लीज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इस 10 मिनट्स में, क्योंकि मैं बताऊंगी, हो सकता है वो टॉपिक्स किसी और को क्लियर हो, और अनदर पर्सन को एनाटॉमी किसी को ज्यादा स्ट्रांग हो बट फिजियोलॉजी नहीं हो. तो सबको अपने वीक पॉइंट्स पता है, तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उसको आप इन 10 मिनट्स में फटाफट स्क्रॉल करिए उसको. उसके बाद आप एक प्रॉपर रिविजन लीजिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इन दिस वीक, एंड इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about that or even with another topics. So thank you for today. Have a good day.